Hello students, we are going to continue the second lesson, that is polynomials. And exercise number 2.2. In previous video we discussed 1-2 bits of the first question. We are going to see the third bit. First we are going to let p of x is equals to 6x square minus 3 minus 7x. See, this is not in standard form. Square term, then there should be this x term and lastly constant term. So x square minus 7x minus 3. Okay, this is p of x. Here a is equals to 6, b is equals to minus 7 and c is equals to minus 3. 6b is equals to minus 7, c is equals to minus 3. Now we are going to in this question we are going to verify the relation between the zeros and coefficient. For that, what we are going to do, first we are going to find the zeros of this polynomial. Just for that we are going to factorize 6 3s are 18 minus 18 के factors करने, 9 2s are 18 because लास्ट टर्म अगर माइनस रहा, कांस्टेंट टर्म उसके साइन माइनस अगर है तो फैक्टर्स का सब्ट्रैक्शन होता है. 18 के फैक्टर्स करना, 9 2s are 18 minus 9 plus 2 that gives you minus 7. Okay, last year we discussed about that. Now we are going to write here these two factors, minus 9x plus 2x minus 3 is equals to 0. This implies take common 3x common from these two, it will be 2x minus 3 plus 1 common 2x minus 3 is equals to 0. So in one bracket 2x minus 3, in another bracket 3x plus 1, that is equals to 0. This implies 2x minus 3 is equals to 0 or 3x plus 1 is equals to 0. First we are finding the zeros of the polynomial. Then x is equals to 3 by 2 or x is equals to minus 1 by 3. Therefore 3 by 2 and minus 1 by 3 are the zeros of p of x. Okay, this completes part number 1. इसका जो पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन में आपको जीरोस फाइंड करना था, तो यहाँ तक अपन ने जीरोस फाइंड कर लिए. Okay, now we are going to verify the relation between the coefficients and the zeros. Verification part now. Verification. In verification part, let, you can write here also, let alpha is equals to 3 by 2 and beta is equals to minus 1 by 3. First we find the sum of zeros, minus 3 by 2, plus 3 by 2 and minus 1 by 3. LCM is 6. 9 minus 2, that gives you 7 by 6. But remember one thing, sum of the zeros is nothing but minus b by a के फॉर्म में चाहिए. तो यहाँ पे माइनस रिक्वायर्ड है, बट नंबर इज पॉजिटिव, उसको निगेटिव करना है तो 2 टाइम्स माइनस लेना, माइनस ऑफ माइनस 7 डिवाइड बाई 6. दिस इज इक्वल्स टू, देखो माइनस तो ऑलरेडी बाहर का माइनस एज इट इज, और ये माइनस 7 तो b की वैल्यू क्या है, माइनस है, तो माइनस 7 के लिए वी आर रिप्लेसिंग 8 by b and 6 is nothing but a. We are
3 by a. तो minus b by a. This is the first relation verified. Now second, product of the zeros, that is 3 by 2 into minus 1 by 3. LCM is 6 minus 3. अपने को c by a चाहिए. यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, उसको रिमूव नहीं कर सकते अपन, जैसे प्लस को अरेंज कर माइनस को थोड़ी करें. तो जस्ट वी आर गोइंग टू रिप्लेस द वैल्यू ऑफ माइनस, दैट इज -3 रिप्लेसिंग बाय c. तो इस -3 के लिए, ये कंप्लीट -3 के लिए वी रिप्लेस बाय c, और 6 के लिए a लिख देंगे. तो सम ऑफ द जीरोस माइनस b by एंड प्रोडक्ट ऑफ द c by a, हेंस verified. Okay, this completes beat number 3. Just wait, bring one duster. Now we'll see the second question, that is next bit of the same question. That is the first question, fourth bit. Polynomial is 4u square plus 8u. First we are going to let this p of u as a 4u square plus 8u. So just square term is there, power 1 term है, फिर ये 0, इसको थर्ड में 0 ले लेना. We'll take third term as 0. अरेंज कर लो. 4u square plus 8u plus 0. So p of u is equals to, here a is equals to 4, b is equals to 8 and c is equals to 0. ABC, we have got the values of ABC now. After getting ABC, now we are going to factorize this 4u square plus 8u. When you are only two terms, constant term जो third term रहता है, that is ax square plus bx plus c, अगर constant term नहीं रहा तो only इसको factorize कैसे करना, only take the common, इसमें सिर्फ common निकालना. 4u you can take common, that is u plus 2 is equals to 0. This implies 4u is equals to 0 or u plus 2 is equals to 0. This implies u is equals to 0 by 4 or u is equals to minus 2. This implies u is equals to 0, 4 by 0 is 0, or u is equals to minus 2. Now these are the two zeros. Therefore 0 and minus 2 are the zeros of p of u. ठीक है, तो in this way we got these two zeros. After getting these zeros, now we are going to verify the relations. Verification. First let alpha is equals to 1 0, 0 भी 0 हो सकता है, and beta is equals to, that's minus 2. Alpha plus beta, that is equals to 0, alpha is 0, beta is minus 2, it will be minus 2. But here the value of a is 4 here, क्योंकि minus b by a, minus तो है already, तो how to write it, तो इसको है ना डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में, just we are going to multiply it by 4 to get डिनोमिनेटर 4. डिनोमिनेटर में 4 लाने के लिए सेम नंबर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना. दिस इज इक्वल्स टू माइनस 8 बाय 4. नो सी, कीप माइनस एज इट इज, ये माइनस एज इट इज, और रिप्लेस दिस 8 बाय b. तो 8 को हम b से रिप्लेस कर दें एंड 4 के लिए a लिख सकते हैं. तो फर्स्ट रिलेशन वेरीफाइड, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस b बाय. राइट, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस b बाय लेके दोनों साइड में इक्वेट कर देते हैं. दैट्स नॉट द प्रॉपर वे. एक पार्ट से, एक साइड से स्टार्ट करना एंड गेट द अदर पार्ट, एंड प्रोडक्ट ऑफ द
zeros. So 0 into minus 2, that gives you 0. You can take denominator as a 4 non-zero number, कोई भी आप ले सकते हैं, बट रियल नंबर ले रहे हैं. तो दिस इज इक्वल्स टू, अब 0 के लिए अपन c लिख सकते हैं. एंड फॉर दिस 4 वी कैन राइट. कुछ स्टूडेंट्स को डाउट लगे 4 कहाँ से आया, बिकॉज यू कैन टेक 0 को आप 0/4 लिख सकते हैं. ठीक है, इसलिए अपन 0/4, क्योंकि अपने को डिनोमिनेटर में a चाहिए, वो रिप्लेस दिस बाय a, राइट. हेंस द रिलेशन वेरीफाइड. This is bit number 4 of the first question. Nextly, bit number 5, first question. Let p of t, variable is t used here, t square minus 15. Okay, so what we can write here then, just if you want to factorize, अब देखो यहाँ पे ax square plus bx plus c के फॉर्म में नहीं है, सिर्फ x square टर्म प्रेजेंट है और c प्रेजेंट है, ये मिडिल टर्म एब्सेंट है. प्रीवियस क्वेश्चन में मिडिल टर्म था और फर्स्ट टर्म था, लास्ट टर्म एब्सेंट था. ऐसे क्वेश्चन में आइडेंटिटी लगाना है a square minus b square. बिफोर दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, जस्ट ए बी सी फाइंड कर लेते हैं. तो टी स्क्वेयर प्लस 0t माइनस 15. हियर a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 0 एंड c इज इक्वल्स टू माइनस 15. साइन के साथ लेना. ओके, दिस इज p ऑफ t. नाउ we are going to find we are going to factorize this. इसको 0 से इक्वेट करना. use the identity a square minus b square. This is equals to 0. 15 is not a perfect square, that's why you can write 15 as a root 15 square. This implies a plus b, a minus b, this is equals to 0. This implies t plus root 15 or t minus root 15 is equals to 0. This implies t plus root 15 is equals to 0 or t minus root 15 is equals to 0. This implies t is equals to minus root 15 or t is equals to root 15. Okay, therefore minus root 15 and root 15 are the zeros of p of t. इस polynomial के zeros. After getting these zeros, now we are going to verify the relation between zeros and coefficients. Verification part. Verification. Let alpha is equals to 15 and beta is equals to under root 15. First we find sum of the zeros. Alpha is minus root 15, beta is under root 15, that gives you 0. For this 0, अब b by a चाहिए ना, तो we can write this as a minus of 0, no problem, upon a क्या है 1 ही है, no problem, 1 लिख सकते हैं. अब 0 is a neutral integer, तो इसमें कोई साइन रहती ही नहीं पहले से, तो you can use minus, क्योंकि माइनस b by एक्सप्रेस करना है ना, माइनस एज इट इज, माइनस ऑफ 0 0 ही होता है, नो प्रॉब्लम. तो 0 की वैल्यू है अपने पास b, तो we can replace this by b and 1 means a. Product of the zeros, root 15 into root 15,
that gives you minus 15. Okay, you can write minus 15 by 1. minus 15 is nothing but c, तो ये minus 15 जो न्यूमरेटर है उसको c लिख देना, और 1 means a, you can write a, hence the relation verified. In this way you have to verify the relation. This is very important. So these questions are very important because board exam में ये questions बहुत बार आते हैं. Okay, let's see the last bit of this question number 1, that is the 6th bit. Let suppose कर लेना polynomial को p of x is equals to 3x square minus x minus 4. Just here a is equals to 3, b is equals to minus 1 and c is equals to minus 4. Then to find the zeros, what we are going to do, just we are going to find the factors, middle term splitting. Okay, minus 4 into 3 minus 12. Now we are going to find out the factors of minus 12 in such a way that the subtraction, last term minus, then the subtraction of the two factors should be minus 1. ये minus 1 है तो यहाँ पे 4 और 3 लेना, मिडिल टर्म माइनस है तो लार्जर फैक्टर को माइनस अप्लाई करना, तो इट इज minus 1. minus 1 means middle term, product of this should be this, and this product is nothing but the product of coefficient of x square and constant term का product रहता है. This implies 3x square minus 4x plus 3x minus 4 is equals to 0. What we have done, minus 4 and 3, इसमें इसको split कर दिया अपन ने, इसलिए इसको middle term splitting बोलते हैं. Now we are going to take common as a x minus 4 plus 1, 3x minus 4 is equals to 0. This implies 3x minus 4 in one bracket, x plus 1 in another bracket. This implies 3x minus 4 is equals to 0 or x plus 1 is equals to 0. As a slant line way आप draw कर सकते. तो 3x is equals to 4, x plus 1 is x is equals to minus 1. This implies x is equals to 4 by 3 or x is equals to minus 1. Therefore 4 by 3 and minus 1 are the zeros of p of x. इस स्टेप से एक पार्ट में फाइंड कर. नाउ वेरिफिकेशन. In verification part, first let alpha is equals to 4 by 3 and beta is equals to minus 1. First we find the sum of the zeros. Alpha is 4 by 3, beta is minus 1. Now take the LCM 3, 4 minus 3, it becomes 1 by 3. Okay, this is 3. Now we require minus b by minus as it is लिखना, और ये minus 1 है, write हम b and a is nothing but 3. देखो यहाँ पे a 3. First relation verified. Now second one, ये part correct है, सिर्फ यहाँ पे ये terms interchange हो गए. Now nextly 4 by 3 into minus 1, so minus 4 by 3. Minus 4 is nothing but c, so you can replace this minus 4 by c, and 3 is nothing but a, hence verified. In this way you can verify the relation between zeros and coefficients. Got it? This completes question number 1 of exercise 2.2.
Now we'll see the second question. Before starting second question, we'll see some part. Suppose if we factorize this x square minus 4x plus 5, okay, is equals to 0. Suppose अपन zeros find कर रहे हैं suppose. तो if we factorize x square minus 5x plus minus 5, that is equals to 0. If we take common from this, अपन ने split कर दिया minus 5 को इस स्टेप से minus 4 5 एंड plus 1 ऐसे split कर दिया. Okay, if we take common x minus 5, if we take 1 common x minus 5 is equals to 0. So x minus 5 in one bracket and x plus 1 in another bracket. We have got two zeros now. Now if you are having two zeros 5 and minus 1, आपके पास अगर दो zeros हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है. If you have two zeros, यहाँ पे पॉलिनोमियल था, उसके zeros अपने by equating with 0 two zeros फाइंड कर ले. अगर टू zeros हैं और पॉलिनोमियल अगर फाइंड करना है तो फार्मूला उसके लिए क्या रहता है, दैट इज एक्स स्क्वायर minus alpha plus beta. Alpha means one zero is alpha, another zero is beta. X plus alpha beta, right? तो इसके दो zeros. अब सपोज आप यहाँ पे 2x स्क्वायर ऐसा लिया, सपोज 3 लिया, क्योंकि जीरो से इक्वेट करने वाले, तो ये जो नंबर्स रहते हैं इधर जाके डिवाइड हो जाते हैं, तो ये फैक्टर्स पे कोई इफेक्ट नहीं करता. तो इसलिए समटाइम्स है ना, तो ये पी ऑफ एक्स जो अपन पॉलिनोमियल फाइंड कर रहे हैं उसका फार्मूला रहता है, उसके आगे है ना ऐसे के लगाते हैं, तो के इज़ ए रियल नंबर. के नहीं अप्लाई करे तो भी चलता है, स्पेशल कंडीशन हो जाती है अगर के अप्लाई नहीं करते तो नो प्रॉब्लम, दैट इज़ आल्सो करेक्ट. तो उन्हें टेक्स्ट बुक में विदाउट की ऐसे डायरेक्ट पॉलिनोमियल दिया, तो अपन वही यूज़ करते हैं. मतलब अगर आपको इफ रिमेंबर दिस फार्मूला, इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of polynomial p of x, then p of x is equals to x square minus alpha plus beta, मतलब sum of zeros बोलते हैं इसको, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज. ये फार्मूला याद रखना. अगर आपके पास समटाइम्स क्या कर दे, अल्फा बीटा सेपरेटली देते हैं. सपोज 3 and 2 आर द zeros of a polynomial, then find the polynomial. तो डायरेक्ट अल्फा यहाँ पे पुट करना, बीटा यहाँ पे पुट करना, या पहले आप अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर लेना, 3 + 2 5, एंड प्रोडक्ट फाइंड कर लेना 3 × 2 दैट इज 6. बाद में यहाँ पुट करेंगे तो पॉलिनोमियल क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5, एक्स एज इट इज़, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इज 6. तो ये हो गया रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल. ओके, समटाइम्स के लगाते, मैंने पहले बताया, नहीं अप्लाई करते भी कोई प्रॉब्लम नहीं. वेयर के इज बाहर के लगा देना, के इज अ रियल नंबर. यहाँ पे भी आप ब्रैकेट के बाहर के लगा सकते हैं. अब ना समटाइम्स क्या होता है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, इफ 3 and 2 आर द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल देन फाइंड द पॉलिनोमियल. अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज. If sum of the zeros is 5 and product is 6, sum of the zeros is 5 and product of zeros is 6, then find the polynomial. कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको अल्फा ही लेते हैं और ये बीटा, यहाँ सम बताया मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है. ये क्वेश्चन में आपको अल्फा एंड बीटा सेपरेटली दिए थे और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा करके वैल्यू दी है. मतलब if the sum of the zeros of a polynomial is 5 and the product of the polynomial 6, then find the polynomial. तो डायरेक्ट इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 पुट कर देना. और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, यहाँ जीरोस दिया था मैंने सेपरेटली और यहाँ पे सम ऑफ द जीरोस दिया, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया. मुझे यहाँ प्रोडक्ट फाइंड करना पड़ रहा है, सम फाइंड करना पड़ रहा है, देन यू कैन पुट हियर.
Okay, we'll see. Remember this formula, just learn this formula. This is x square minus alpha plus beta x plus alpha beta. Okay, now we'll see the exercise questions. Exercise 2.2, question number 2. Find the quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product. मतलब आपको यहाँ पे सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है. फर्स्ट दिया है 1/4, दिस इज सम एंड प्रोडक्ट. पहले लेट अल्फा एंड बीटा बी zeros ऑफ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स. अपने पी ऑफ एक्स फाइंड करना है. तो पहले आपको देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा क्या गिवन है 1/4. ये सम दिया है, सम ऑफ जीरोस गिवन है, राइट. एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस is -1. Therefore the required polynomial p of x is equals to formula is x square. के भी अप्लाई कर सकते हैं, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस. या जीरोस नहीं दिए, ये जीरोस नहीं है, ये अल्फा बीटा नहीं है, ये सम ऑफ द सम एंड प्रोडक्ट. ये फॉलोइंग नंबर जो है ना सम एंड प्रोडक्ट दिया, मतलब ये अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा इंटू बीटा है. तो एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ द जीरोस मीन्स 1/4 यू कैन पुट हियर एक्स प्लस इंटू -1 लिखो, और डायरेक्टली यू कैन पुट माइनस हियर, माइनस ऑफ 1 अल्फा प्लस बीटा माइनस. अब यहाँ पे एलसीएम लेना पहले, डिनोमिनेटर में ऐसे कभी नहीं रखना फ्रैक्शन में. तो 4x स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है. और ये जो 1/4 है दैट इज 4x स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 4 p ऑफ x. दिस इम्प्लाइज p ऑफ x इज इक्वल्स टू, देखो ये 1/4 नहीं लिखते, डायरेक्ट 4x स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 4 लिखते हैं. वाई? बिकॉज आप इसके जीरोस फाइंड करो और इसके जीरोस फाइंड करो, सेम आते हैं. सी हो, अगर एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 4 अपने लिया, ठीक है. अगर इसके जीरोस फाइंड करेंगे तो बाहर अगर मैंने 1/4 लिखा, क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये 1/4 इधर जाके डिवाइड होगा तो वो तो ज़ीरो ही होने वाला है, इसका कुछ इफेक्ट ही नहीं रहता. इसलिए पॉलिनोमियल जब अपन लिखते हैं तो ये कोएफिशिएंट जो अपन लेके आते हैं, तो डोंट राइट दिस कोएफिशिएंट, इसको रिमूव कर देना. और डायरेक्ट पॉलिनोमियल जो है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में आंसर्स ये रहेंगे, ये नहीं रहेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके जीरोज और इसके जीरोज सेम रहते हैं, दैट्स वाई. और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म में है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Now the second bit of the second question, √2 and 1/3 given. First, suppose this sum of the zeros is given √2 and product of zeros is given 1/3. ये सम एंड प्रोडक्ट है, हाँ, ये अल्फा बीटा नहीं है. कभी कभी अल्फा बीटा भी देते तो बाद में आपको सम फाइंड करना पड़ता है. ओके, इट्स नॉट द केस हियर. Therefore the required polynomial p of x is equals to x square minus alpha plus beta x plus alpha into beta. ये फार्मूला रहता है पॉलिनोमियल फाइंड करने का. x स्क्वेयर, तो वेरिएबल y भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ मेंशन नहीं रहता. दिस इज √2x 1/3. नाउ यू कैन टेक द एलसीएम हियर. तो 3x स्क्वेयर माइनस 3√2x प्लस 1, दिस इज इक्वल्स टू 1/3. ये 3 जो है इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं, 3√2x प्लस 1.
जब अपन जीरोज फाइंड करते तो ये अगर ज़ीरो लिखा ये 1/3 इंटू ज़ीरो तो 3 इंटू ज़ीरो तो ज़ीरो हो जाता है, इसलिए 1/3 और ये ब्रैकेट इसकी ज़ीरोज़ और ये पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ सेम रहते हैं, इसलिए जब अपन सिंपलेस्ट फॉर्म में कंसिडर करते तो ये पॉलिनोमियल कंसिडर करें। इन टेक्स्ट बुक आंसर्स में भी आपको यही फॉर्म मिलेगा, ये 1/3 नहीं दिखेगा क्योंकि दोनों के ज़ीरोज़ सेम ही रहते, तो इसलिए पी ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू 3x² minus 3√2x plus 1. Okay, now next, that is third bit. In third bit 0 and √5 given, so let alpha plus beta is equals to 0, alpha into beta is equals to √5. The required polynomial p of x is equals to x² minus alpha plus beta x plus product of the zeros. This is equals to x² minus alpha plus beta is 0, x is √5. This is equals to x², 0 into x to 0, x plus √5. Okay, so this is that polynomial. Next, is bit number 4. Bit number 4 में 1, let alpha plus beta is equals to 1, product of the zeros is also 1. Same रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के लिए सेम लिखना, मतलब यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, इसके बाद का पार्ट यहाँ पे। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू x², अल्फा प्लस बीटा इज 1, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x² माइनस x प्लस 1. दिस इज दैट रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल. ओके, next, bit number 5. Let alpha plus beta is -1/4 and product of the zeros is 1/4. तो डायरेक्टली यहाँ सब्सटीट्यूट कर देना. द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल्स टू x² माइनस ऑफ -1/4 x प्लस 1/4. दिस इज इक्वल्स टू x² प्लस 1/4 x प्लस 1/4. नाउ टेक द LCM. 4x² प्लस 1x प्लस 1 और 1/4 4x² plus x plus 1. Therefore that required polynomial, that p of x is equals to कोएफिशिएंट, मतलब 1 बाय ब्रैकेटेड के बाहर जो टर्म है डोंट राइट दैट टर्म, और टेक्स्ट बुक में इसी फॉर्म में आंसर्स अवेलेबल. ओके, नेक्स्टली लास्ट बिट, that is sixth bit. Sixth bit is let alpha plus beta that is equals to 4 and product of the zeros is given 1. So what we are going to do, just we are going to
x square minus 4x plus 1. This x square for last term, therefore required polynomial is x square minus 4x plus 1. This is the final answer. Remember one thing, यहाँ माइनस रहता या और यहाँ प्लस रहता, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक्स करते हैं. Okay, this completes exercise number 2.2. Sorry, we'll see the next exercise, that is before starting the next exercise, division algorithm, divide कैसे करना है एक polynomial को second polynomial से. We'll see in the next video. Thank you.